Alright, question 2.9. A photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on a metal surface. The work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate part 1, the energy of photon in electron volts. Second, kinetic energy of emission. And third, velocity of photoelectron. You are given that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. Okay, so the first part, there will be seeing two methods. All right, so the first is that you are given the wavelength, that is lambda is given, right? 4 into 10 to the power minus 7 meters. All right, so you're supposed to calculate the energy. So this is fairly straightforward. E equal to hc by lambda. It implies E is equal to, and again you put all the values. There's nothing difficult in this. Into 3 into 10 to the power 8 divided by lambda is 4 into 10 to the power minus 7 meters. तो अब जो ये एनर्जी आएगी जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इन जूल्स. ओके, क्योंकि हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड ऑल द SI units. So this turns out to be 4.9695 into 10 to the power minus 19 joules. And you can convert it in electron volt. ठीक है भाई, 1.6 into 10 to the power minus 19 joules कितने हैं, 1 electron volt है. So you can apply the unitary method. So in electron volts, this will be simply 4.9695 into 10 to the power minus 19, and this will be divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. All right, so this turns out to be in electron volts, this turns out to be 3.1 eV. ठीक है भाई, कितना आ जाएगा ये, 3.1 electron volt. So this is one method. What I would suggest is that you remember this. E is equal to 1242 divided by lambda. Lambda here has to be in nanometers. तो आपकी एनर्जी डायरेक्टली ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी. ठीक है, एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा क्या है नैनोमीटर में. ठीक है, यू कैन वेरीफाई दिस बाय मैनिपुलेटिंग HC. ओके, सो if we use this, then E, energy in electron volts, 1242, and I have to divide it by wavelength in nanometers. So nanometers, 4 into 10 to the power minus 7 meter. Okay, so it will be 400 nanometer. You can verify it. So energy in electron volts comes out to be 3.1 eV. ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने जैसे कि बात करी है कि अगर आप लैम्डा नैनोमीटर में रख रहे हैं और 1242 से उसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. तो ये तरीका है, एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और आल्सो इन स्कूल एग्जाम्स. ठीक है, स्कूल एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने की ये सारा जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला and then you can put it here. Okay, next is you have to calculate the kinetic energy of the emission. So देखिए, obviously they are talking photoelectric effect here. Okay, so this is my incident energy h nu naught. This is my work function or threshold energy. ठीक है, h nu naught को क्या बोलते हैं हम, work function या threshold energy, and this is simply, and this is equal to kinetic energy. In fact, this is kinetic energy max. ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, h nu, तो इंसिडेंट एनर्जी हमें पता ही है, दिस इज 3.1 और वर्क फंक्शन इज 2.13. so here again you can calculate the kinetic energy max.
देखिए यूनिट्स इन्होंने बोला नहीं है कि कौन से यूनिट्स हैं, सो यू कैन जस्ट लीव इट हियर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. के मैक्स, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा? दिस विल टर्न आउट 0.97 electron volts. Clear? All right. The third part is you can also convert it into joules if you require. 1 electron volt is given to be 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So you just have to multiply it. The third part is velocity of photoelectron. All right. This again is fairly straightforward. हमें पता है कि velocity का क्या मतलब, kinetic energy का क्या मतलब हुआ, half. ठीक है. Photoelectron is just electron. Since it is in photoelectric effect, that particular electron which we are talking, so it is called photoelectron. ठीक है भाई, ये photoelectron is a normal electron. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? half mass into electron into velocity, and this will be equal to 0.97. और यहाँ पे देखिए, अब आप सारी ही SI यूनिट्स रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रखेंगे, क्या है, you'll convert it into joules. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को ही आपने इक्वेट कर दिया है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, सो वेलोसिटी स्क्वायर इज 0.97 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 क्रॉस मल्टीप्लाई 2, एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप रखेंगे 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. Okay, so you just have to solve it. V is equal to 0.97 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2 divided by 9.1 multiplied by 10 to the power minus 31, और इसका स्क्वायर रूट, राइट? Calculation is tedious, no doubt. So the velocity in this case turns out to be 5.84 into 10 to the power 5 meter per second. All right, SI units.